Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 18th of April. The session will be quite interesting students, so stay tuned till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis, which are very beneficial for your competitive exams. Students, in this video we will be talking about Niti Aayog that has unveiled a roadmap to unlock $25 billion export in India's hand and power tool sector. Then we will be talking about Make in India. Next thing we will be talking about India's growth, right? We will be discussing it. Next thing we will be talking about is the Dustlick 6 exercise that was held in Pune recently. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. Niti Aayog has unveiled a roadmap to unlock $25 billion exports in the India's hand and power tool sector. So the tool sector will be growing here, and for this a $25 billion amount has been allocated, right? And this report was released by recently Niti Aayog that stated unlocking $25 billion plus export potential for India's handloom sector, right? This amount, right? This is not the amount that has been allocated. Basically, this is the amount that our country, India, can achieve for the export in the next 10 years in the hands and power tool sector, right? Also, this report, as I mentioned, was released by Niti Aayog, who is the Vice Chairman of Niti Aayog, Suman K. Berry, recently released this report. If we talk about this, India's share in the global hand and power tool sector trade is currently valued at $100 billion and it is expected to grow to $190 billion by 2035. Also, India's share remains a modest 1.8% in hands tool sector in the right. And also, if we talk about Niti Aayog, we discussed that who is the Vice Chairman here. So, Vice Chairman Suman K. Berry, who is the Chief Executive Officer of Niti Aayog, BVR Subramaniam, headquarter of which is in New Delhi, right? Also, if we talk about the current global market share of China, here you can see China leads in the global export market by holding 50% of the hand tools market and 40% of the power tools export. And our country's India share remains modest at 1.8% in the tools, hand tools, and 0.7% in the power tool sector. Moving on, next is Make in India. Make in India, we are talking about is that what is Make in India? That we want to enhance the manufacturing in our country, India. We do not want to import products. We want to export more products. How we can export more products? When we are making those products in-house, that means in our own country, right? So this Make in India boosting India's global presence in the pharmaceutical sector. Here we are talking about manufacturing in the pharmaceutical sector. Our country is the world's third largest by volume and 11th largest in terms of value, right? In terms of volume, if we see, we are the third largest, and in terms of the value, in terms of money, we are the 11th largest exporter of, or we are the largest trader of pharmaceutical sector. Correct? Take a note of this. India is globally the largest supplier of generic drugs, accounting for almost 20% of the global supply.
Also, our country is one of the biggest suppliers of the low cost vaccines in the world. During COVID-19 also, India helped a lot of countries during that time by providing them with various equipments and medicines also. If we see this, India is the fourth largest medical device market in Asia after Japan, China and South Korea, and our country is among the top 20 global medical device markets in the world. Take a note of it. Apart from this, one thing remember students, recently if we are talking about the FDI under the medtech activities or in the medical sector, 100% FDI was allowed by the government of India in the pharmaceutical sectors, right? Take a note of this. Also, PLI scheme was launched, where that is, PLI is your production linked incentive scheme, and this is basically that if you make certain amount of product that the goal is achieved, then the government will be providing with some incentives on the production of it. Next we are talking about India's cumulative export expected to grow by 5.5% to $820 billion in FY 24-25. See, one thing you need to understand students, export and import, right? Our country is net importer. That means we have to buy more products from different parts of the world to fulfill the needs of the population, right? And that is the reason when the dollar value fluctuates, that means now it is close to 85, but it also touched 87. So during this time when the value of dollar appreciates, that means the rupee depreciates, in that case it becomes difficult for us, it becomes hard for us, as because we are net importer. So for every dollar we have to give more amount of rupees if the dollar increases for the same amount of trade, right? And if we become net exporter, then it will be good for us, because at that time we will be gaining more and more dollars in our country, right? So India's cumulative export expected to grow by 5.5%. As per the data of the Ministry of Commerce and Industry, India's total export, that includes your merchandise and service, during FY 24-25 is estimated at $820 billion, registering a growth of 5.5% from 78 billion in FY 24. If we talk about this merchandise export, it stood at $437 billion in FY 25. Similarly, the merchandise import, this was your merchandise export. If we talk about the merchandise import, it stands at $720 billion. So you can see a huge gap, almost $300 billion margin. That means we are importing more merchandise than we are exporting it. Similarly, if we talk about the key exports, it grew by 40%, rising from $1.29 billion to $1.81 billion in FY 25. Similarly, exports of the drug and pharmaceutical rose by 9.39%, and the rice exports saw a 19.73% increase from $10.42 billion to $12.47 billion in FY 25. So we can see in these sectors the amount of export is increasing. Similarly, if we talk about the service sector, right? If we talk about the service sector, the value of export of service was at 383 billion, whereas the service import was at 194 billion dollar. So in this sector, in service sector, you can see we are net exporter. That means our somewhere services such as your IT services, one of the major key play here, where we are exporting more than we are importing, correct? But in merchandise, we are seeing that merchandise we are net importer. Moving on, next is India and Uzbekistan's joint military exercise Dustlik 6 has recently commenced. Where was this held in? It was held in Pune. Take a note of this, students, that Dustlik exercise. This is an exercise between India and Uzbekistan. It was held where? It was held in Pune recently, Pune, Maharashtra. This is a 13-day long exercise, and Dustlik basically it means friendship, right? And the previous edition of this Dustlik, that was Dustlik 5, it was held in Uzbekistan. If we talk from India, from Indian contingent, in this Jat regiment took part. Jat regiment took part in this exercise. Next is United States of America has emerged as the India's largest trading partner for the fourth consecutive year in FY 25, as per the data released by Ministry of Commerce and Industry. So direct question, that which country emerged as the India's largest trading partner for the fourth consecutive year? It is United States of America. And the bilateral trade has reached $131.84
billion between India and United States of America. China stood at the second position as the India's second largest trading partner with a total bilateral trade of $127 billion, whereas United Arab Emirates was on the third position and the bilateral trade between India and UAE stood at $100.5 billion. So I repeat, USA at top position with $131.84 billion, China on the second position with $127 billion, and UAE on third position with $100.5 billion. If we see that India's export to USA has grown by almost 11.6% as compared to last year, the export has grown here, and the import from USA has also grown by 7.4% as compared to last year. Correct? Take a note of this. So you can see India's export to USA grew by 11.6%. Imports from USA rose by 7.44%. Right? And the trade surplus is in favor of India. Correct? That is increased to $41.18 billion in FY25. So with USA, we are in trade surplus. That means we are importing less and exporting more to USA. Next, for China, China remained as the India's largest trading partner. India's export to China declined by 14.5%, whereas import from China increased by 11.52%. That means the export to China has declined, whereas the import from China has increased. Next is Defense Secretary Rajesh Kumar's visit to Italy from April 14 and 15. Right? Rajesh Kumar Singh, he is the Secretary of the Ministry of Defense, and he visited Rome, Italy from 14th to 15th of April. This will boost the trade between India and Italy in the defense sector. Right? Here, strength, the defense, maritime, industrial cooperation, they all things will be focused here. Correct? Also, a joint defense committee meeting was held. This was the 11th edition of the India-Italy Joint Defense Committee meeting that was co-chaired by Rajesh Kumar Singh and Luisa Riccardi, the Secretary General of the Defense of Italy. Also, MOUs were signed here. These MOUs were basically focusing on the aerospace and defense security between these two countries. This MOU, these MOUs, they will focus on research and development, technology transfer, joint production of various equipments, and business to business engagements. Next is Union Minister Amit Shah has addressed the state level cooperative conference that was held in Madhya Pradesh, in Bhopal, Madhya Pradesh. So who addressed the state level cooperative conference? It was addressed by Amit Shah, where in Bhopal, Madhya Pradesh, and the event was organized under the 2025 International Cooperative Year to emphasize the importance of cooperative societies in India. Correct? Take a note of this, students. Important. Apart from this, remember here, during this event, MOUs were also signed between the National Dairy Development Board and Madhya Pradesh Cooperative Dairy Federation. This will enhance the role of the cooperative societies in the milk production across the state. Moving on to international affairs, students. ACI is your Airport Council International, right? The world's top 10 busiest airport report was recently released, and Atlanta Airport has secured the top position, whereas Indira Gandhi International Airport of Delhi was at the 9th position in terms of the busiest airport. I repeat, this is the annual ranking of the world's busiest airport, and Delhi Airport, that is Indira Gandhi International Airport, was at the 9th position, and Atlanta Airport, correct, secured the first position. Correct? This Atlanta Airport is of USA, and Atlanta Airport is handling over 108 million passengers, or they handled 108 million passengers in 2024. Right? On second position is the Dubai Airport, Dubai International Airport. If we talk about ACI, Airports Council International, who is the Director General here? Justin Erbaki. Headquarter is in Montreal, Canada. Next is World Bank State of Social Protection report was recently released, right? And this report states that almost 2 billion in LICs and MICs still lack adequate social coverage. What is the LIC? LIC is your low income countries and MIC is your middle income countries. So this report states that almost 2 billion people, that is 3 out of the
4 people in the low income countries and middle income countries, they have no access to social protection services, right? And this report also highlighted that the social protection around the world is declining, right? That people are not able to get the social coverage that is required for them. Also, this report has been developed by the World Bank's Aspire, that is Atlas of Social Protection Indicators of Resilience and Equity team, that works from various departments working on social safety nets, labors, skills, pensions, and many more. Also, according to the data from 73 countries, about low income countries, middle income countries, and high income countries, this report states that the social protection coverage grew steadily between 2010 to 2022. On an average, that cover rose by 10%, moving from 41% to 51% of the population. But still, we are seeing almost 2 billion people around the world, they lack social coverage, right? Take a note of this. Next is economy and business students. UNCTAD report was recently released and it projects Indian economy to grow by 6.5% in the calendar year 25. So it is UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development. They have released a report that is talking about Indian economy, that it will be growing by 6.5% in the calendar year. Earlier they were projecting, or last year they projected that for the calendar year 24 the economy will be growing by 6.9%. Correct. Next, where is the headquarter of UNCTAD? It is in Geneva, Switzerland. Next students, awards and recognition. We are talking about the 6th edition of the National Highways Excellence Award that was held in New Delhi. I repeat, 6th edition of the National Highways Excellence Award that was organized by the Ministry of Road Transport and Highways. These award recognizes the professionals delivering excellence in the national highway development. Also, 22 entries out of the total 125 nominees were shortlisted by the jury through multiple evaluation rounds, and for the year 2023 the awards were given for outstanding projects across 5 different categories. Also, during this event the winners of the hackathon were also announced for their innovative ideas and tech driven solution. So coming back, 6th edition of the National Highway Excellence Awards were recently held in New Delhi, right? Next, these awards are basically talking about excellence in project management, green highways, best engineering award, special recognition award, project management in public private partnership, and so on. Go through the PPT students, you will be seeing multiple awardees there, so go through them once, right? If we talk about NHAI, can you tell me who is the chairperson of NHAI? Santosh Kumar Yadav. Next is former England fast bowler James Anderson awarded the knighthood for his service to cricket. So direct question, who was awarded with the knighthood for his service to cricket? Fast bowler James Anderson of England. Next is appointments and resignation. Who has been appointed recently? The 52nd Chief Justice of India. So Justice Bhushan Ramakrishna Gawai is set to become the 52nd Chief Justice of India. Take a note of this, and he will serve basically here. Who will be the 52nd Chief Justice of India? Right? B.R. Gawai, that is Justice Bhushan Ramakrishna Gawai. Correct? Take a note of this. Next is Saurav Ganguly reappointed as the ICC Men's Cricket Team Committee Chairperson. I repeat, Saurav Ganguly, the very famous former Indian cricket captain, right? He was reappointed as the chairperson of the ICC's Men's Cricket Committee. He will be succeeding Anil Kumble, who completed the maximum permitted 3-year terms. Next is acquisitions and mergers, students. Let's look at them. First is Union Cabinet CCI has recently approved the acquisition of the shares is in SNV Aviation Private Limited, that is your Akasa Air, by PI Opportunities Fund 1 Scheme 2, that is PIOF, right? So in which the shares will be acquired in Akasa Air by PI Opportunities Fund 1 Scheme 2. Right, as well as 361, they both will be acquiring in Akasa Air. Second is CCI has approved the proposed merger of Quality Care India Limited with Aster DM Healthcare Limited along with the related transactions. So remember these two. Next is science and technology. L&T has recently
L&T has recently, or L&T's indigenous 651 kilowatt water jet propulsion system successfully completed the sea trials for Indian Navy. This is your water jet propulsion system, right? And it is 661 or not 651 kilowatt water jet propulsion system. This is a major development for India's indigenous and naval propulsion capabilities, right? And it was recently successfully completed the sea trials, right, for the Indian Navy. If we talk about L&T, who is the chairman and managing director? S.N. Subramaniam, headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in 1946. Next is China-based Betavolt has unveiled a nuclear-powered BV100 battery with 50 years lifespan. See, in today's world, students, electric vehicles are the game changers. And for electric vehicles, and everything is getting electric right now, right? So for them to running, we need battery, we need storage, right? So these batteries should be of high quality. They should have a high charge span, correct? So recently Beijing China based Beta Vault, this is a company, and they have recently developed a nuclear, or basically they are a company that is a nuclear energy battery developer. They have developed a nuclear powered battery that has been named as BV100, that is capable for operating up to 50 years on a single charge. That is a game changer, right? Next is environment, students. Zoological Survey of India and Germany's Museum Coing Bonn has discovered 6 new Sericinae beetle species that has been discovered in India. These are the 6 new species that were recently discovered in India. Correct? These are the species of Sericinae scarab beetles. Next is new frog species, that is Leptobrachium Ariatium, right? I repeat, Leptobrachium Ariatium has been discovered in Assam's Garbhanga Reserve Forest. So coming back, this Garbhanga Reserve Forest, this is in Assam, and here new species of frog has been discovered, that is your Leptobrachium Ariatium. This is the name of the new frog species that has been discovered recently. Next is related to sports, students. Magnus Carlsen has won the inaugural, that means the first edition of the Freestyle Chess Grand Slam 2025 that was held in France recently. Next is Obituary, students. Former Prime Minister of Malaysia Abdul Ahmad Badwai has recently passed away at the age of 85 in Kuala Lumpur, Malaysia, and he served as the 5th Prime Minister of Malaysia from 2003 to 2009. Next is important day, students. World Hemophilia Day, observed on 17th of April. This day is observed basically to create awareness about the bleeding disorder, or hemophilia, that is a rare inherited bleeding disorder, and other related disorder that affects the blood's ability to clot. Right? There is a theme for this also, students, that you need to remember. Access for all, women and girls bleed too. And this year it was the 31st anniversary of the World Hemophilia Day. Next is state news, students. Telangana has launched Bhu Bharti portal that will enhance the land record transparency. This will be able to store all the land related documents for an ownership or a person, right? And it will become easy for the government also to track them and maintain transparency. So Chief Minister of Telangana A. Revanth Reddy inaugurated Bhu Bharti portal, an integrated online revenue records management system that is designed to enhance land security and bring transparency to land records across the state. This initiative, it replaces the previous Dharani portal that was introduced in 2020. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. In December, students and teachers from Dyal Singh Public School, Karnal, Haryana were recognized by NASA's International Astronomical Search Collaboration for discovering which type of asteroid. They discovered the main belt asteroid. Correct? And Diksha, a class 11 student, and her team Aryabhat, consisting of 11 peers, under the guidance of Principal Sushma Devgan and Dr. Kaveri Chauhan, received this IASC certificates for discovering and registering 11 near-Earth objects. Next, which of the following points are correct with respect to the recipients of National Sports Award 2024 to be held on 17th of January? If we look at the options, B and C are right, A is wrong. A is saying Olympic medalist Manu Bakar and Neeraj Chopra from chess has won the, I repeat, Olympic medalist Manu Bakar and Neeraj Chopra, chess world champion D. Gukesh, and para-athlete Praveen Kumar were named as the recipients of the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award for 2024.
So if we look at the options here, who were honored with this, who were selected here, right? So they were Manu Bakar, right? Harmanpreet Singh, not Neeraj Chopra, and D. Gukesh and Praveen Kumar, right? Instead of Neeraj Chopra, remember Harmanpreet Singh. They were honored with this Major Dhyanchand Khel Ratna Award. Next is which of the following are correct with respect to 82nd edition of the Golden Globes Award 25 held in January in California, USA. If we look at the options, all these three options are rightly mentioned respect to the 82nd edition of the Golden Globes Award. Next, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport has recently become India's first and world's third airport to receive the prestigious Level 5 accreditation for exemplary customer experience standards. From whom they received this award? They received this from Airport Council International, ACI, and they received this Level 5 accreditation, which is the highest distinction award from the ACI for exemplary customer experience standards. Next, which beaches in Kerala were recently awarded with the Blue Flag certification by the Foundation of Environment Education? So it is your Kappad and Chal beaches, right? They are in the Kappal beach. This Kappad beach, it is in Kozhikode, and Chal beach is in Kannur. They were recently awarded with this Blue Flag certification. Next is which university has recently recognized by the University Grant Commission UGC under section 2F of the UGC Act of 1956, enabling it to offer academic courses in physical education, sports sciences, including undergraduate programs, diplomas, postgraduate diplomas, and so on. It is your Bihar Sports University. Next, who was recently awarded the Honorary Citizen Award for his outstanding contributions to Singapore and Singapore-India relation? So it is Tarun Das. The award was presented by Singapore President Tharman Shanmugaratnam at a ceremony held in New Delhi. Next, and one more thing, remember Tarun Das, he is the second Indian after Ratan Tata ji, the former chairman of Tata Group, who was awarded with the same award in 2008. Next, according to the first edition of HSBC Hurun Global India list recently published, which of the following are correct? If we look at the options here, option A and C are right, B is wrong. B is saying that the Hurun list includes a total of 100 NRIs in this list. So a total of 102 NRIs were listed in the HSBC Hurun Global India's list. Next, name the Indian short film that recently received a nomination for the Best Live Action Film Short Film category at the 27th Academy Awards in January 2025. So what is the name of that short film? It is Anuja. Correct. This is the Indian short film that received a nomination for the Best Live Action Short Film category at the 97th Academy Awards in January. Next, the E-Plane company recently received the approval for type certification of the electric vertical takeoff and landing aircraft, the EX200. This is the name of E200X. This is the name of the electrical vertical takeoff and landing aircraft, making it the first private Indian firm to receive the formal acceptance. From whom? So they received this formal acceptance from DGCA, Directorate General of Civil Aviation, and the company that developed this E200X, it is your E-Plane company. Next is who has been ranked the first in the Forbes 50 over 50 women's global list recently released by Forbes for her achievements in the infectious disease epidemiology. So it is Qureshi Abdul Karim. Take a note of this. He was recently Qureshi Abdul Karim. She was ranked first in the Forbes 50 over 50 women's global list. Not he, she. Next is winners of the 76th Republic Day Parade in 2025 were announced recently. Pick out the incorrect statement. If we look at the options here, which of the following is the incorrect statement? So C is incorrect. That means A and B are right. C is saying that Ministry of Tribal Affairs was awarded with the People's Choice Award for Best Debut in the Central Ministries Department category. So no, it is not Ministry of Tribal Affairs, but it is Ministry of Women, Child and Development that were awarded the People's Choice Award for Best Debut in Central Ministries Department category. Next, name the private sector bank that recently received the award in all 7 categories at the 20th Annual Banking Technology Conference Expo and Citation held in Mumbai, Maharashtra for the second consecutive year. It is your City Union Bank Limited. This is the private sector bank that received the award in the all 7 categories at the 20th Annual Banking Technology Conference Expo and Citation. Let's move to the homework section, students.
First question is, who recently received the Ugadi Award? Why this Ugadi Award is given and who received it? Tell me. Second question, who recently was conferred with the Sri Lanka's highest honor for a foreign leader? Third question, who was honored with the key to city of Lisbon? Name that individual. Fourth question, FREM 2 mission. Tell me about this FREM 2 mission. Which organization launched it and why was this launched? Fifth question, Tiger Triumph. This is an exercise that was held between which two nations and which two nations armies or navies or air force that took part in this exercise. Then sixth question, who has won the Tashkent Open memorial title? So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 18 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कि जो हमारे हैंड एंड पावर टूल सेक्टर है उसमें हमारा क्या पोटेंशियल है। देन हम बात करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को लेके कि कितना हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, कितना हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है, क्या डिफरेंस है एंड एवरीथिंग। देन इसके बाद बात करेंगे डस्लिक 6 एक्सरसाइज की, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई। ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ये सारी न्यूज़ एंड इसके अलावा काफ़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, तो एंड तक बने रहिए कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये आपके लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से। स्टूडेंट्स, नीति आयोग के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई एंड एक रोड मैप यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया कि हम कैसे $25 बिलियन एक्सपोर्ट को अचीव कर सकते हैं हैंड एंड पावर टूल सेक्टर में इंडिया के। राइट, देखो, इंडिया इम्पोर्ट और हम एक्सपोर्ट की बात करें ना, हम मेक इन इंडिया के हिसाब से हमें एक्सपोर्ट करना है। हम चाहते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो जाए, हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पर ख़त्म हो जाए। राइट, एंड यहीं पे हम ग्लोबल का 10% यहाँ पे मार्केट जो ग्लोबल ट्रेड है, राइट, हैंड्स एंड टूल का, उसको हम अचीव करना चाहते हैं। राइट, जो ग्लोबल पावर टूल सेक्टर है उसमें 10% एंड जो हैंड टूल्स मार्केट है उसमें 25% हम अचीव करना चाहते हैं। सुमन के बेरी, जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल हैंड एंड पावर टूल ट्रेड में, इट इज़ वैल्यूड एट $100 बिलियन एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये बढ़कर $190 बिलियन हो जाएगा बाय 2035। अगर हम देखें चाइना, ये लीड करता है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में 50%, मतलब ग्लोबली जो आपके हैंड टूल मार्केट में हैंड टूल्स हैं, आपके पावर टूल्स हैं, उसमें से हर 2 में से 1 टूल चाइना के द्वारा बनाया जाता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। राइट, एंड ये आप देख सकते हैं इंडिया का शेयर 1.8% है हैंड टूल सेक्टर में एंड 0.7% है पावर टूल सेक्टर में। नेक्स्ट आ जाते हैं मेक इन इंडिया। अभी हम बात कर रहे थे मेक इन इंडिया की। हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ना कि दूसरी कंट्री से हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकें। राइट, तो सिमिलरली फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स में भी हम मेक इन इंडिया को बूस्ट देना चाहते हैं। हम वर्ल्ड के जो इंडिया की फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम
एंड अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करें तो हम 11th पोजीशन पर आ जाते हैं। करेक्ट। इंडिया ग्लोबली लार्जेस्ट सप्लायर है जेनेरिक ड्रग्स का, 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई हमारे पास है। इवन कोविड-19 के टाइम पे भी आपने देखा होगा तो बहुत बड़े स्केल पे इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प की थी, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया था। राइट। कमिंग बैक, इंडिया 4th लार्जेस्ट मार्केट आ जाती है मेडिकल डिवाइस की इन एशिया आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के कम्युलेटिव एक्सपोर्ट की। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5.5% टू $820 बिलियन इन FY25। देखो, इंडिया एक नेट इम्पोर्टर है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। यहीं पे अगर मैं बात कर दूं मर्चेंडाइज गुड की एंड आपके सर्विस सेक्टर की, तो जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड है ना, हमने एक्सपोर्ट कितना किया, $437 बिलियन। वहीं पे हमने इंपोर्ट कितना किया, $720 बिलियन। तो यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट $300 बिलियन का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कम है एंड हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सर्विस सेक्टर में हमने जो इंपोर्ट करा, सर्विस सेक्टर में जो हमने इंपोर्ट करा वो था $194 बिलियन। वहीं पे हमने कितना सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट करा, वो था $383 बिलियन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्टर आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। जैसे आईटी, इंडिया की आईटी सर्विस बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो ऐसे ही सर्विस सेक्टर में हम हैं नेट एक्सपोर्टर, लेकिन मर्चेंडाइज ट्रेड में हम हैं नेट इंपोर्टर। चलिए, फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें देखा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता हुआ दिखा। कॉफ़ी 40% से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर 9% से बढ़ता हुआ दिखा। राइस में ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे डस्टलिक एक्सरसाइज की। ये डस्टलिक का 6ठा एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 5वां एडिशन लास्ट ईयर उज्बेकिस्तान में हुआ था और इस बार 6ठा एडिशन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के द्वारा मिलकर पुणे, महाराष्ट्र में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंडिया की तरफ से किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, जाट रेजिमेंट का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था इस डस्टलिक एक्सरसाइज में। इसके बाद आ जाते हैं यूएसए, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर निकल कर आया है फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन FY25। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया। यहीं पे हम देखें तो पहली पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $131 बिलियन से हमारा ट्रेड था। सेकंड पोजीशन पे है चाइना विद $127 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड। थर्ड पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड, राइट। तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इंडिया यूएस ट्रेड की बात करूं तो जो एक्सपोर्ट है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएसए 11% से बढ़ गया, $86.51 बिलियन। इंपोर्ट्स $45.33 बिलियन, 7.5% से बढ़ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सरप्लस है। मतलब अगर हम इंडिया और यूएसए की ट्रेड की बात करें तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को एंड उनसे कम इंपोर्ट करते हैं। वहीं पे अगर मैं चाइना और इंडिया की बात करूं तो डेफिसिट देखने को मिलता है। हमारा जो एक्सपोर्ट था चाइना को 4.5% से गिर गया, वहीं पे जो इंपोर्ट था चाइना से वो 11.5% से हमें बढ़ता हुआ दिखा। एक्सपोर्ट कितना करते हैं हम चाइना को, ओनली $14.25 बिलियन। वहीं पे हम इंपोर्ट कितना करते हैं चाइना से, $113 बिलियन का गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरव्यू ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार। ये अभी विजिट पे थे रोम इटली पे, राइट। रोम इटली में ये विजिट करके आए हैं अभी 14-15 अप्रैल को। मल्टीपल MOUs यहाँ पे साइन किए गए ताकि इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, जॉइंट ऑपरेशंस यहाँ पे हम ला सकें, प्रोडक्ट्स को बना सकें, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा सके, बिजनेस टू बिजनेस को यहाँ पे बूस्ट करने का भी काम किया गया। इसी के अलावा यहाँ पे हम देखेंगे MOUs जो साइन किए गए हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, हमारे जो कि होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने एड्रेस किया स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में थी। लोकेशन याद रखेंगे इसको। एंड दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द 2025 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के अंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। अभी ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इनके द्वारा वर्ल्ड की टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट का भी एक इंडेक्स रिलीज किया गया, जहाँ पे अटलांटा एयरपोर्ट जो कि USA का है, इन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन। मतलब ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है 2025
2024 में। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में है, ये 9th पोजीशन पे यहाँ पर हमें देखने को मिला। करेक्ट। अगर मैं बात करूं एटलांटा एयरपोर्ट की, कितने पैसेंजर्स इन्होंने हैंडल करे हैं 2024 में, राइट, एज ये वर्ल्ड के हाईएस्ट या फिर बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है, तो 108 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पे इन्होंने हैंडल करे। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, 77 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पे हमारे द्वारा हैंडल किए गए। 3rd पोजीशन पे आ जाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया 2 बिलियन लोग जो कि लो इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में है, उनके पास स्टिल जो सोशल कवरेज है, सोशल प्रोटेक्शन है, वो हमें नहीं देखने को मिलती है। पिछले कुछ टाइम से सोशल प्रोटेक्शन इंक्रीज होती हुई दिख रही है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, जिनको कोई भी एक्सेस नहीं है टू सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज, राइट। इसी के अलावा इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक की एस्पायर के द्वारा बनाया गया है। एस्पायर क्या है? एटलस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर्स ऑफ रेजिलियंस एंड इक्विटी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। यूएनसीटीएडी के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.5% से इन कैलेंडर ईयर 25। देखो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर हमें यूएस में रिसेशन देखने को मिला, अगर ये टैरिफ वॉर चलती रही, राइट, एंड कोई और यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखें तो यूएसए ने चाइना पे 245% के टैरिफ लगा दिए हैं, जो कि क्रेजी हैं, राइट, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। अगर आपका पहले कोई गुड 100 रुपये का था वहाँ पर, तो वो सीधा बढ़ के 200, सीधा बढ़ के वो कितना हो गया है 300, मतलब 245 का बढ़ गया ना, 245 से तो 345 का वो हो गया। मतलब क्रेजी चीज़ें होती हुई हमें दिख रही हैं, राइट। तो अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर ऐसे ही ये फर्दर टैरिफ वॉर चलती है, रिसेशन आता है, तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी भी हिंडर हो सकती है। ऑन द अदर हैंड सब ठीक रहता है तो हमारी जीडीपी में इंक्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। हम बात करेंगे 6ठे एडिशन ऑफ नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड की, जो कि अभी हमें दिल्ली में देखने को मिली। हाईवेज कैसे बनाए गए, क्या प्रोडक्ट से बनाए गए, किस कंपनी के द्वारा बनाए गए, कितनी जल्दी बनाए गए, कितना कम पैसा लगा, कितने टाइम में बनाए गए, राइट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्टर्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं एंड 22 एंट्रीज को आउट ऑफ 125 नॉमिनेशन को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, राइट, ताकि ये अवार्ड से सम्मानित किया जाए। इवन इसके दौरान जो हैकेथॉन था, एक बेसिकली आपका पथ चिंतन हैकेथॉन, उसके विनर्स को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। अगर मैं हाईवेज की बात कर रहा हूँ तो एनएचएआई क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, इनको अवार्ड किया गया नाइटहुड से फॉर हिज सर्विस टू क्रिकेट। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मार्केट। फिर आ जाते हैं इसके बाद अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवाई, BR गवाई जी, ये अभी 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, राइट, ये सेट टू बिकम दिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अच्छा आप मुझे बता दो ये किनको सक्सीड करेंगे फिर, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सौरव गांगुली रीअपॉइंटेड एज द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी चेयरपर्सन। ये सक्सीड करेंगे अनिल कुंबले को, जिन्होंने अपना मैक्सिमम परमिटेड 3 ईयर का 3 टर्म्स पूरी कर ली हैं। अब सौरव गांगुली को यहाँ पे ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। 2 एक्विजिशंस याद रखेंगे। पहला है SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है अकासा एयर, इसके शेयर्स को एक्वायर किया जाएगा पाई अपॉर्चुनिटीज फंड 1 स्कीम 2 के द्वारा एंड 361 के द्वारा। दूसरा आ जाता है अप्रूव द मर्जर ऑफ क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड एंड विद एस्टर DM हेल्थ केयर लिमिटेड, इन दोनों को यहाँ पे मर्ज किया जाएगा। CCI के द्वारा ये दोनों अप्रूवल्स दिए गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर स्टूडेंट्स। L&T का इंडिजिनियस 651 किलोवाट का वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। इसने अपना सी ट्रायल्स अभी पूरा कर लिया है फॉर इंडियन नेवी। इससे इंडियन नेवी के जो प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, राइट, जो उनकी नेवी हो गई, राइट, जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे, जो आपके INS हो गए, आपके जो फेरीज हो गई, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड इंडिया की यहाँ पे जो मैरिटाइम सेक्टर है उसमें यहाँ पे हमें एडवांसमेंट देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इसके बाद चाइना बेस्ड बेटा वॉल्ट, इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड BV100 बैटरी को अनवेल किया, जिसको अगर आप एक बार चार्ज कर देंगे तो 50 साल तक वो बैटरी चलेगी, जो कि क्रेजी रहेगी। स्टूडेंट्स अगर अभी हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर डिमांड बढ़ रही है तो बैटरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी बैटरी होगी उतना लंबा टाइम तक वो आपका एवरेज देगी। तो
इसीलिए हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अभी अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कम है। कल को अगर कोई बैटरी आ जाती है, ऐसे मान लो कोई बैटरी आ जाती है जिसको आप एक बार चार्ज करो एंड वो कह रही है आपको कि हम 2 लाख किलोमीटर्स, 1 लाख किलोमीटर्स, 50,000 किलोमीटर्स की एवरेज दे रहे हैं, तो वो एक गेम चेंजर हो सकती है, राइट। बट अभी वो टेक्नोलॉजी तक हम पहुंचे नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, बट स्टिल अभी बीजिंग चाइना बेस्ड बीटा वोल्ट, ये एक न्यूक्लियर एनर्जी बैटरी डेवलपर है जिन्होंने एक न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी डेवलप करी है BV100 के नाम से, जो कि एक बार चार्ज करोगे आप 50 साल तक वो सिंगल चार्ज पे ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट इन्वायरमेंट के ऊपर आ जाते हैं। ZSI एंड जर्मनी म्यूजियम कोइंग बॉन, इन्होंने डिस्कवर की 6 नई स्पीशीज ऑफ बीटल जो इंडिया में डिस्कवर की गई। कौन सी स्पीशीज रहेंगी ये है आपकी सेरिसिने स्क्रैब बीटल्स की स्पीशीज जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं नई फ्रॉग की स्पीशीज जो कि है लेप्टोब्रेशियम आर्यटियम, राइट। लेप्टोब्रेशियम आर्यटियम ये डिस्कवर किया गए हैं कहाँ पर, असम के गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में ये नई फ्रॉग की स्पीशीज अभी डिस्कवर की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। मैग्नस कार्लसन ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इन्होंने इनॉग्रल फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 को जीत लिया जो कि फ्रांस में हुआ था। तो लोकेशन हो गई एंड इनॉग्रल है, तो ये पहला एडिशन रहेगा इस फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम का जो कि फ्रांस में हुआ था एंड मैग्नस कार्लसन ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर स्टूडेंट्स। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अब्दुल्ला अहमद बदवाई, इनका रिसेंटली निधन हो गया 85 की एज में कुआलालंपुर मलेशिया में, एंड ये इन्होंने सर्व किया था एज 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया 2003 से 2009 तक। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। हीमोफीलिया बेसिकली आपका एक ये डिसऑर्डर है जहाँ पे आपका ब्लड से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, राइट। एंड इसमें इनहेरिटेड ये एक रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। 31st एनिवर्सरी इस बार इसकी ऑब्जर्व की गई एंड इसकी एक थीम रहेगी एक्सेस फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ये थीम रहेगी, सो टेक अ नोट ऑफ इट। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट न्यूज़ के स्टूडेंट्स। तेलंगाना ने लॉन्च किया भू भारती पोर्टल। ये बेसिकली एक पोर्टल रहेगा जो कि आपके लैंड रिकॉर्ड्स की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का काम करेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी एंड प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड स्टोर किए जाएंगे, किसके नाम पर है, कितनी जमीन है, कहाँ पर है। तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकी एंड एक प्रॉपर आपका एक प्रॉपर प्रोसेस भी बन जाएगी, राइट। तो इससे ये रिप्लेस करेगा धरानी पोर्टल को जो 2020 में भी लॉन्च किया गया था। ये है आपका भू भारती पोर्टल, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफी बेनिफिशियल रहेगा। Name the first made in India robotic system installed at Nobel Hospital and Research Center पुणे महाराष्ट्र में। उसका नाम क्या है, SSI मंत्रा। मल्टीपल रोबोटिक आर्म्स रहेंगे इसके एंड ये सर्जन्स को काफ़ी असिस्ट कर पाएगा, राइट, ड्यूरिंग सर्जरी, राइट। इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा सर्जन्स के लिए टू नेविगेट। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द न्यू मार्स ड्रोन जो कि नासा के द्वारा अनवेल किया गया, जो कि सक्सेसर रहेगा इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर का, राइट। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर मार्स पे भेजा गया था, करेक्ट, रोवर के साथ में भेजा गया था एंड एक्सप्लोर करने के आसपास के एरिया को भेजा गया था, राइट। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रोन ओनली। अब बोला जा रहा है कि इसका सक्सेसर मतलब इसका भी नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, मार्स चॉपर। नेक्स्ट, छठा एंड द फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डैश इस अंडर द प्रोजेक्ट 75 इसको डिलीवर किया गया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा टू द इंडियन नेवी ऑन 9th of January। तो पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा उसका, वो है INS बख्शीर। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया कोरिया बेस्ड SIIS कंपनी लिमिटेड के साथ टू सप्लाई हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा इन कोरिया। तो पिक्सल के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स डिड चाइना रिसेंटली लॉन्च इनटू जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट टू टेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग एंड एक्सटेंडिंग सैटेलाइट लाइफ स्पैन। तो वो है शिजियन 25। नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेकंड मल्टीपर्पज वेसल ऑफ द इंडियन नेवी जिसका नेम है INS उत्कर्ष फ्रॉम देयर शिपयार्ड इन कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु डिजाइंड फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस। तो वो है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। Next, which of the following satellites constellation was recently launched by Pixel, marking India's first private satellite constellation designed to capture data across more than 150 spectral bands? तो वो है फायरफ्लाई। इनके द्वारा एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया गया है। कॉन्स्टलेशन होता है अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का एक ग्रुप, राइट। ये पहला फेज रहेगा पिक्सल की कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का। टेक अ नोट ऑफ दिस
एंड 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स में यहाँ पे ये सैटेलाइट्स डाटा कलेक्ट कर सकती हैं फॉर वेजिटेशन हेल्थ, वाटर क्वालिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड मोर। नेक्स्ट आ जाते हैं जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन। इन्होंने लॉन्च किया रीयूजेबल क्या रॉकेट, कौन सा रॉकेट, फ्रॉम केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन। तो ये रहेगा न्यू ग्लैन रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, राइट। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाकिस्तान पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई, वो है PRSE-EO1, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया क्या इन जनवरी 2025 एट देयर टेस्ट फैसिलिटी इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो ये था आपका एक क्रायोजेनिक इंजन जो कि इंडिया के द्वारा अभी सॉरी नॉट क्रायोजेनिक, विकास लिक्विड इंजन जो कि इसरो के द्वारा भी टेस्ट किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसका नाम रहेगा स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ताकि स्पेस ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सके। तो ये कंपनी है दिगंतारा, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप बैक्ड कंपनी रहेगी, एज वेल एज सिडबी बैक्ड ये कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, DRDO ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी रिसेंटली कंडक्ट किया इंडिया का पहला ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिव कूल्ड डैश जो कि 120 सेकंड तक लास्ट किया, स्क्रैमजेट कंबस्टर। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी अंडर इसरो जिसने डिस्पैच किया क्रू मॉड्यूल को फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन गगनयान 1 टू सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो वो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इन दिल्ली। तो वो है शून्य, राइट। शून्य है वो इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। इसकी 20 से 30 किलोमीटर तक की यहाँ पे रेंज रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द पेलोड जिसको रिसेंटली डिप्लॉय किया गया इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 मिशन के लिए, राइट, पोम 4 के लिए। तो पेलोड का नाम पूछा गया है, पेलोड है GLX-SQ। नेक्स्ट, इसरो ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया 100th मिशन ऑफ GSLV F-15 फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये मिशन कौन सी सैटेलाइट कैरी कर रही है, तो ये NVS-02 सैटेलाइट को कैरी कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया नई जाइंट रेडियो गैलेक्सी यूजिंग मीरकैट टेलीस्कोप इन नॉर्दर्न कैप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो GRG है, इट इज नेम्ड एट व्हाट, इट इज नेम्ड एज इनका थाजो। नेक्स्ट, नासा इन्होंने रिसेंटली अनवेल किया, अच्छा एक चीज़ और, ये जो गैलेक्सी डिस्कवर की गई है ना, नहीं चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, नासा रिसेंटली अनवेल्ड द डिस्कवरी ऑफ अ सुपरमैसिव ब्लैक होल, राइट, जिसका नाम है LID 568। इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड चंद्र X ऑब्जर्वेटरी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंड बोला जा रहा है जो ये ब्लैक होल है ये 1.5 बिलियन ईयर्स के बाद बना था आफ्टर बिग बैंग, राइट, एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स। Let's move to the homework section, students. First question is, who recently received the Ugadi Award? Why this Ugadi Award is given and who received it? Tell me. Second question, who recently was conferred with the Sri Lanka's highest honor for a foreign leader? Third question, who was honored with the key to city of Lisbon? Name that individual. Fourth question, FREM 2 mission. Tell me about this FREM 2 mission. Which organization launched it and why was this launched? Fifth question, Tiger Triumph. This is an exercise that was held between which two nations and which two nations armies or navies or air force that took part in this exercise. Then sixth question, who has won the Tashkent Open memorial title? So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.